बनती 3 बोन से हैं। Number 1 is the pubis, which is a pink colored portion in the video. The second portion is the ilium, which is a flat plate-like structure. And the third one, it is the ischium. तो 3 bony parts हैं, pubis, ilium and ischium. ये तीनों मिलकर एक बोन बनाते हैं, जिसको कि हम हिप बोन कह रहे हैं। ये तीनों बोन्स जो है ये मिलकर बीच में एक कैविटी बनाएगी, जो आपकी स्क्रीन पर पिंक कलर की नजर आ रही है। एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एसिटाबुलम। So the pubis, ischium, and ilium, all these 3 bones, they unite each other at the acetabulum. This is a ilium, which is a pink colored portion. Then we have the ischium, and this in the acetabulum, it is a horseshoe shaped facet. Facet है एक horseshoe shaped. इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि जो हमारी हिप बोन है, इसके साथ फीमर आर्टिकुलेट करती है और हिप जॉइंट बनाती है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो जो एसिटाबुलम है, ये एक काइंड ऑफ सॉकेट है, जिसके अंदर फीमर के हेड की बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आके आर्टिकुलेट होती है। एंड देन a hip joint is formed. So in the acetabulum, there is a horseshoe shaped facet covered in life by articular hyaline cartilage. So the pink colored portion you can watch on your screen, it is covered with hyaline cartilage throughout the life. It is one of the 2 articular surfaces in the hip joint. Hip joint के अंदर 2 articular surfaces होते हैं, and it is one of the articular surface that is the acetabulum के अंदर horseshoe shaped facet. Now, during the development, they are separated from each other by the triradiate cartilage. Now, we all know that the hip bone, it is a composite bone, or we can say कि ये 3 बोन से मिलकर बनी है, that is pubis, ilium and ischium. शुरुआत में जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो तीनों बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और इस कार्टिलेज को हम ट्राइरेडिएट कार्टिलेज बोलते हैं। हेयर, अभी तक हम 2 कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला कार्टिलेज हमने पढ़ा था हायालीन कार्टिलेज, जो कि हॉर्स शू शेप्ड जो है, इस वाले एरिया को कवर कर रहा था। एंड नाउ जो हमने सेकंड कार्टिलेज पढ़ा है, इट इज ट्राइरेडिएट कार्टिलेज। ट्राइरेडिएट कार्टिलेज वो कार्टिलेज है, ट्राई ट्राई मींस 3, जो कि 3 बोन्स के बीच में पाया जाएगा। दिस इज द रेड कलर कार्टिलेज, दिस इज द ट्राइरेडिएट कार्टिलेज। Now, during the development, they are separated from each other. Again, you can look here. There is a triradiate cartilage in between these 3 bones, that is the ischium, pubis, and the ilium. The pubis. Now, let's talk about pubis. The pubis consists of 3 main sections and has a number of interesting features. So, you can look at a bone in this diagram that जब भी आपके हाथ में एक हिप बोन होगी, उस हिप बोन के अंदर सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस होगा, एंड दिस फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड इलियम। देन देयर विल बी अ कैविटी, एक सॉकेट होगा, एंड दिस सॉकेट इज कॉल्ड एसिटाबुलम। सॉकेट के नीचे आगे की साइड एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर होगा, और ये थोड़ा थिन होगा, पकड़ने में पतला होगा एज कंपेयर टू दी ऑपोजिट स्ट्रक्चर। सो जो थोड़ा थिक स्ट्रक्चर है, जो थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर है पकड़ने में, दिस इज कॉल्ड द इशियम। एंड द स्ट्रक्चर विच इज लिटिल बिट थिन and slightly pointed also, this structure is called the pubis. And here the pink colored surface is called the body of the pubis. Now the pubis, again, as we know, there are 3 main sections. हमने एक पढ़ लिया, that is the body. The second one is the superior ramus of the pubis. So acetabulum के अंदर जाते टाइम, एसिटाबुलम के अंदर अगर हम देखें, दिस इज एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के जस्ट साइड पे देयर इज अ सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। मतलब प्यूबिस यहाँ पर, अगर दिस इज अ प्यूबिस स्ट्रक्चर, अगर ये आपका पूरा का पूरा प्यूबिस बोन है, प्यूबिस बोन का स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर 3 मेन सेक्शंस है। नंबर 1 इज अ बॉडी, जो कि बिल्कुल सेंटर में है। देन बॉडी के ऊपर है,
That's why we are saying it is a superior ramus of the pubis. और अगर यही चीज बॉडी से नीचे होगी, दिस इज द बॉडी, अगर बॉडी से नीचे होगी तो हम बोलेंगे inferior ramus of the pubis. So there are basically we can say there are three major portions in the pubis. That is number one, the body, which is this area, then the superior ramus, and then the third one is the inferior ramus of the pubis. So one more thing is here, that is the pubic tubercle. Pubic tubercle, you can look on your screen that this is a pointed structure which is marked by a pink color. तो ये जो आपका पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बनाने में हेल्प करेगा, दिस इज कॉल्ड द प्यूबिक ट्यूबरकल, and this provide attachment for the inguinal ligament. Now the pubis again, it consists of three main sections and we all know about that. हमने सुपीरियर रेमस के बारे में देख लिया, उसकी बॉडी देख ली कहाँ पर है, प्यूबिक ट्यूबरकल देख लिया कहाँ पर है. Now let's talk about the some another anatomical structure like the obturator crest and the obturator groove. So you can look at the superior ramus, जहाँ पर ये superior ramus of pubis acetabulum के अंदर जाकर यूनाइट हो रही है, अटैच हो रही है. एट दिस साइड देयर इज अ क्रेस्ट, एक छत है, एक रूफ है, एंड दिस रूफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर क्रेस्ट. दिस रूफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर क्रेस्ट. और जस्ट बिलो द ऑब्चुरेटर क्रेस्ट देयर इज अ ग्रूव, एक इंप्रेशन है, एंड दैट दिस इंप्रेशन इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर ग्रूव. सो अभी तक हमने पढ़ा दैट दिस पोर्शन इज अ बॉडी, दिस इज द सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, दिस इज द प्यूबिक ट्यूबरकल. एंड नाउ जहां पर ये प्यूबिस बोन आपके एसिटाबुलम के अंदर जाके यूनाइट हो रही है, देयर इज अ क्रेस्ट, एंड दिस क्रेस्ट इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर क्रेस्ट, एंड जस्ट बिलो दिस क्रेस्ट इज ऑब्चुरेटर groove, which is a kind of impression. Now again, as I already told you that if this is the body, अगर ये आपकी बॉडी है प्यूबिस की, this is the pubic tubercle, this is the superior ramus of the pubis. Superior ramus क्यों बोला? It is present above the body. And if a ramus, a kind of anatomical structure which is present below this body, then we will say it is the inferior ramus of the pubis. So it is just very simple. A body, there is a basic a body है, बॉडी के ऊपर वाला सुपीरियर रेमस है, बॉडी के नीचे वाला इंफीरियर रेमस है. बिल्कुल जो एक चोंच निकली हुई है, एक बीक लाइक या पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द प्यूबिक ट्यूबरकल. नाउ दिस इज द ऑब्चुरेटर क्रेस्ट, जहां पर आपकी प्यूबिस बोन या फिर जहां पर आपका superior ramus of the pubis, it is going and attaching with the acetabulum. This is the obturator crest, and just below the obturator crest is a groove, and this groove is called obturator groove. Now let's talk about the ischium. So again, जैसे हमने pubis पढ़ी, same ischium भी है. This is the body of ischium. Now the body of ischium, it is just present below the acetabulum. So you can look, ये एक बड़ा thick सा part होगा, and just above this thick portion, the pink colored structure, it is called the body of ischium. Joins with the ramus of the ischium. So you can look at this diagram कि यहाँ पर जो this is the pubic bone and this is the ischium bone. दोनों की दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई है थ्रू अ रेमस, जो कि आपको बीच में पिंक कलर का रेमस नजर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड द ischial ramus. Now this ischial ramus, it is going and it is attaching with the inferior pubic ramus. So इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि दिस इज द बॉडी ऑफ द प्यूबिस. बॉडी ऑफ प्यूबिस के नीचे दिस इज द inferior ramus of the pubis. This is the body of ischium just below the acetabulum, and now this is the ramus of the ischium, and this ramus of the ischium, it is going and it is articulating, or we can say it is just adjoining the inferior pubic ramus. So एक continuity जो है वो किसने maintain करी? Ischial ramus है, वो आपका attach हो गया with the inferior ramus of the pubis. So just one second. Yes. So this is about the ischial ramus. Now the pubic tubercle, it provides the attachment for adductor longus.
तो मसल अटैचमेंट अब हम साथ में ही लेकर चलेंगे। ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल बिल्कुल सेंटर में जो आता है, जो आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बनाता है, यहाँ से आपकी अटैचमेंट होती है एडक्टर लॉन्गस मसल की। As the name suggests, adductor longus, it means it is helping in the adduction of the lower limb. The ischial tuberosity is the part of the hip bone upon which the upper body rests when a person is seated. So you can look at this thick structure which is marked by a pink color. This is the ischial tuberosity. और जब हम लोग बैठते हैं, जब कोई भी सिटिंग पोजीशन में होता है, so we usually sit on this ischial tuberosity. The body weight of our body, the upper trunk, ये सारा का सारा ischial tuberosity पर होता है जब भी हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं. The ischial tuberosity, as we know, it is a part on which the upper body rests when a person is seated. The hip bone has been tilted. So here you can see the hip bone को थोड़ा सा tilt कर दिया गया है just to demonstrate the ischial tuberosity. It is very thick as compared to the pubis. So if you have to distinguish while when you are holding a hip bone in your hands, that which portion is pubis and which portion is ischium, then on the basis of thickness आप पता लगा सकते हैं जहां पर थोड़ा pointed स्ट्रक्चर निकल रहा है दैट इज द प्यूबिस, और जो थोड़ा थिक स्ट्रक्चर है जहां आपको लगता है कि यस इट इज अ काइंड ऑफ वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर, दैट इज द ischium. Basically that is the ischial tuberosity. Now there is a ischial spine also. So hip bone को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके देखते हैं, तो जस्ट above the ischial tuberosity एक स्पाइन निकल रही है, दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर, दिस इज द ischial spine, जो थोड़ा सा तिकोना स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर है. सो अगेन द हिप बोन इज टिल्टेड हियर टू डेमोन्स्ट्रेट यू. लेट अस understand about it clearly once again. So as we all know that this is the, yes, this is the acetabulum. ये आपका एसिटेबुलम है. हमें पता है एसिटेबुलम के जस्ट आगे नीचे की साइड, दिस इज द सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, body of pubis, and then there is an inferior ramus of the pubis. This is the pubic tubercle. This is the obturator crest, and just below the obturator crest is the obturator groove. On the opposite side, this is the body of ischium. This is the ischial tuberosity, and just below the ischial tuberosity, this is the ischial ramus. Just behind the ischial tuberosity, there is a spine, pointed structure, and this pointed structure is called ischial spine. The ilium also has a number of interesting features. So you can see that this flat structure, kind of a plate-like structure, it is not usually flat, but yes, on the basis, अगर हम बाकी bones के basis पे देखें, pubis या ischium के basis पे देखें, तो थोड़ा flat है, expanded है, and this is the ilium. The hole in the hip bone, जो आपको hole नजर आता है pubis और ischium के बीच में, just below the acetabulum, this hole is basically called as the obturator foramen. So this red color marked hole, it is the obturator foramen. This is the ilium, again the body of ilium just above the acetabulum. This is the acetabulum. Acetabulum के just ऊपर जाएंगे, this pink color portion, this is called the body of ilium, जो कि further एक expanded portion के साथ जुड़ी हुई है, adjoined है. The ilium, you can see that there are surfaces on the ilium. So interesting features है, हमारे जो ilium है इसके पास दो तरीके के surfaces है. One is a gluteal surface and one more surface is also there, that is called the medial surface, or you can say the internal surface. So you can see this is a gluteal surface, or it is also called posterolateral surface. Posterior because the gluteus muscle, it lies behind our body, right? तो पीछे की साइड पर होती है gluteal muscle. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इलियम का जो आपका ग्लूटियल सरफेस है ये भी पोस्टीरोलेटरल है. पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड है, लेटरल थोड़ा सा लेटरली लाई करता है अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें. सो दिस इज द पोस्टीरोलेटरल और द ग्लूटियल सरफेस. And the ilium, again, it has an internal surface also, which is called the medial surface, and this is the medial surface. Now how you can distinguish कि medial surface कौन सा है या lateral surface, or we can say the gluteal surface ये कौन सा है. तो जब भी आप medial surface की बात करेंगे, medial surface it means what, that
the surface which has kind of impression like this, यहाँ पर आपका sacroiliac joint बनेगा. सो जब भी आपको एक इस काइंड ऑफ बोन, ऐसी बोन दिखे कि हाँ इलियम का ये वाला पोर्शन जो है इसके पे इतनी बड़ी एक इंप्रेशन है जहां पर आपका सेक्रम आके यूनाइट करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, एंड देन इट विल फॉर्म अ सैक्रोइलियाक जॉइंट. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल सरफेस, और यू कैन से इट इज अ मीडियल सरफेस. एंड अगर आपको लगता है जस्ट अबव द एसिटाबुलम और बाहर की तरफ थोड़ा सा लाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरोलेटरल और द ग्लूटियल सरफेस. सो द, और यू कैन सिंपली से कि जिस सरफेस के ऊपर ऐसा इंप्रेशन नहीं होगा, दैट इज द ग्लूटियल सरफेस, एंड द सरफेस व्हिच इज हैविंग अ काइंड ऑफ impression like this for the sacroiliac joint articulation, then that structure is called the, that surface is called the medial or the internal surface. So this is the ala of ilium. Ilium ka ala, it means it the posterolateral surface or the gluteal surface. It is also called the ala of ilium. दिस इज द इलियक क्रेस्ट, एक सबसे ऊपर जो आपकी इलियम की रूफ है, दिस इज द इलियम. इलियम के ऊपर एक जो रूफ है जो पिंक कलर से मार्क है, दिस इज कॉल्ड इलियक क्रेस्ट, दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर. अब ये इलियक क्रेस्ट अगर आपकी बॉडी के आगे की साइड आती है, बिकॉज if I draw a diagram here to demonstrate clearly about the surfaces, you can look कि इस तरीके से हमें पता है कि हमारी pelvic bone kind of butterfly टाइप्स होती है. आगे की साइड you have a pubic tubercle and it will join like this, and then it will form a pubic symphysis joint, right? Then there's obturator foramen. Then you have a acetabulum cavity. If this is acetabulum cavity, let us consider this acetabulum cavity. Here what will happen, the femur it will articulate here, the ball structure of the femur it will articulate here, and then it will form the hip joint. So basically अगर हम pelvic region की बात कर रहे हैं, there are three main joints जो हम यहाँ बनेंगे. नंबर वन जॉइंट इज द हिप जॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एसिटाबुलम ने और फीमर के राउंडेड बॉल लाइक हेड ने बनाया. देन प्यूबिक ट्यूबरकल्स ने मिलकर सेंटर में जो जॉइंट बनाया है, दिस इज कॉल्ड द प्यूबिक सिम्फाइसिस. नाउ वन मोर जॉइंट इज हेयर, जो आपका इलियम है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो आपका, दिस इज द इलियम, राइट? तो जो आपका इलियम है, इसमें इंटरनल सरफेस पे देयर इज अ इंप्रेशन where the sacrum it articulates, and then it will form the sacroiliac joint, SIJ, that is the sacroiliac joint. So if this is the, you can say ilium, this is the pubic tubercle, pubic symphysis joint, right? Then there's the acetabulum cavity, यहाँ पर आपकी फीमर आ गई. सो अंदर वाली साइड पर यहाँ पर आपका इस तरीके से सेक्रम आएगा. सो दिस जॉइंट between the ilium and the sacrum, this is called the sacroiliac joint. अब अगर आपकी बॉडी में आगे की साइड आप इलियक क्रेस्ट को पालपेट करते हैं, अगर अपनी रिस्ट पे, आप अपने वेस्ट पे अगर अपने हाथों को प्लेस करें, अपने हैंड्स को प्लेस करें, so you will feel a bony prominence, and it is very very important for the point of view of diagnosis of different conditions in physiotherapy, basically like LLD, the limb length discrepancies and all. अब जो भी कई काफी टेस्ट होते हैं, जैसे जिलेट टेस्ट जो कि आप इन्हें इलियक क्रेस्ट के थ्रू करते हैं. तो इलियक क्रेस्ट का जो आगे वाला पोर्शन है, जो आपकी बॉडी में आगे एंटीरियरली लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. एंड देयर इज अ PSIS. अगर अपनी बॉडी में पीछे की साइड देखें, सो देयर आर टू डिंपल्स, देयर आर टू you can say oval depressions over your behind surface of your gluteal. अगर आप gluteus muscle के just above देखेंगे, as on the side of the sacroiliac joint, there are two dimples which is also called the gluteal dimple, and that is basically the PSIS, that is posterior superior iliac spine. So this is the iliac crest. Now you can look here that iliac crest जो है, ऊपर वाली एक रूफ जो है, it runs from the anterior superior iliac spine. So the आगे वाला जो पोर्शन जो आपका एंटीरियरली लाई करेगा, that is called ASIS, and ASIS the anterior superior iliac spine. Basically ये पूरा पूरा का पूरा पिंक स्ट्रक्चर इज द iliac crest. ये पूरा ASIS नहीं है जिसपे आप हाथ रखोगे. जहां आपके आगे इंडेक्स फिंगर टिप आएगी, इंडेक्स फिंगर की जो टिप आएगी, that portion is called the ASIS, and the whole portion is called the iliac crest. सेम इसका ऑपोजिट, जो पीछे की तरफ जहां आपका थंब प्लेस होगा, थंब की फिंगर टिप, थंब का जो टिप है वो पीछे प्लेस होगा, दैट इज कॉल्ड द PSIS, और यू कैन से द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन.
So the inferior iliac spine is also there. It is below the ASIS. So अगर ये ऊपर वाला ASIS है, just below the ASIS is a AIIS, that is anterior inferior iliac spine. Now below the posterior superior iliac spine is the posterior inferior iliac spine. So again, this portion is called the posterior superior iliac spine, that is PSIS, and just below the PSIS you have the PIIS, that is posterior iliac inferior iliac spine. The medial surface of ilium is divided into two parts. So इसका medial surface है या internal surface है, ये दो parts के अंदर divided है. So in this diagram यहाँ gluteus maximus की मसल दिखाई गई है, जो कि आपके posterolateral surface या gluteal surface पर joined होगी, attached होगी. So there is a gluteal surface of the ilium. It provides attachment to the gluteal muscle, as you can see in this diagram. Just 1 minute. The auricular facet articulates with the sacrum at the sacroiliac joint. So आपको पता है, जो आगे मैंने बोला कि जो medial surface पर एक impression होगा for the sacroiliac joint, that is called a auricular facet. It is just like a ear-like impression on the medial surface of the hip bone or the ilium. So that auricular facet, it articulates with the sacrum and then it forms a sacroiliac joint. So this is the ilium bone and this is the sacrum, and then they form the sacroiliac joint, SI joint. The medial surface of the ilium is divided into two parts. As you know, this is the auricular facet, जहाँ पर आपका sacrum आके articulate करेगा. The iliac fossa, it provides attachment to iliacus. Now दो surfaces होते हैं आपके medial surface के अंदर. Number one is this auricular facet, and number two is this area. This is called iliac fossa. This is the iliac fossa. So there are basically two surfaces on the medial surface. Number one is the auricular facet, and the second one is the iliac fossa. Iliac fossa provides attachment for the iliacus muscle के लिए, which inserts onto the lesser trochanter of the femur. You can see in the diagram कि यहाँ से आपकी जो है iliacus muscle का origin है, and it is getting inserted on the lesser tubercle of the femur. And what is the lesser tubercle of the femur? You will get to know in the upcoming video of the femur anatomy. Iliacus जो है ये आपकी hip joint में flexion में help करती है. So the action is flexion of the hip joint. This is the iliac fossa जहाँ पे iliacus origin है, originated है यहाँ से. This is the auricular facet. These are the two basic surfaces, or we can say they are two divisional parts of the medial surface of the or the internal surface of the ilium. The articular facet or the auricular facet articulates the sacrum and then it forms the sacroiliac joint, as you know. Now let's talk about the muscle attachment of the hip bone. Number one is the tensor fasciae latae, TFL. It originates from ASIS, outer lip of anterior 1/4 of the iliac crest. You can look at the diagram. This is the ASIS, originated है यहाँ से, ASIS से. ASIS से पीछे की तरफ जाएगी, आउटर लिप पे जाएगी, एंटीरियर जो आपका iliac crest है उसके 1/4 एरिया को कवर कर रही है. And this is called the fasciae lata. The tensor fasciae latae, as you can look in this diagram, it is getting originated from that ASIS and the 1/4 area of that iliac crest, anterior iliac crest. It is a kind of long muscle. It is a kind of band. It goes down till the lateral condyle of the tibia. So it inserts via the iliotibial tract or iliotibial band, जिसको हम बोलते हैं जो ilium से tibia. नेम से क्या पता लग रहा है, iliotibial band, IT band. It means it is moving from the ilium to the tibia. So tensor fasciae latae जो है ये आपके साइड पे एक मसल्स हैं जो आपके ASIS से निकली, originated है. यही मसल्स आगे जाकर एक बैंड बना रही है. That band is called iliotibial band, IT band.
और ये आईटी बैंड आपका लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल टिबियल कॉन्डाइल पर जाकर इंसर्ट हो रहा है। वहां पर गर्डीज ट्यूबरकल है। दैट अबाउट द गर्डीज ट्यूबरकल एंड अबाउट द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया you will get to know from the upcoming videos of the lower limb anatomy. Next is the sartorius, which is the longest muscle of the body. Sartorius, it originates from the ASIS. So ये just ASIS से है. ASIS के पीछे TFL थी, लेकिन ये डायरेक्ट आपकी ASIS से निकली है. It inserts onto the medial aspect of the tibia. जो आपकी आईटी बैंड थी या टेंसर फेशियल एटे के बारे में हमने पढ़ा, वो ASIS से निकली. सम पोर्शन 1/4 ऑफ द इलियक क्रेस्ट से भी निकली थी, एंटीरियर वाली, और वो आपकी लेटरल टिबियल कॉन्डाइल पे जा रही है. On the other hand, the sartorius muscle, you can look in the diagram that it is originating from the ASIS, but it is getting inserted on the medial aspect of the upper tibia. तो वो लेटरल साइड पर थी आपकी TFL, और ये जो sartorius है आपकी मीडियल साइड पर आती है. तो ये हेल्प करती है फ्लेक्शन में. Flexes adducts and laterally rotates the hip, and it also flexes the knee. तो जब भी हम बैठते हैं क्रॉस लेग करके या चौकड़ी मार के, एट दैट टाइम sartorius मसल जो है ये एक्ट कर रही होती है बेसिकली. So you can look at the muscle origin, and this is the insertion. Next is the gluteus medius. It originates from outer surface of ilium between the posterior and the anterior gluteal line. So there are some gluteal lines. About gluteal line I will teach you after some slides. Gluteus medius एक muscle है जो originate हुई from the outer surface of ilium. It means from the posterolateral surface of the ilium, या फिर जो gluteal surface है वहां से हुई origin. और उस gluteal surface पे, इस gluteal surface पे भी there are three kind of lines: the posterior gluteal line, the anterior gluteal line, right? So posterior और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में से जो बीच वाला एरिया है, उस एरिया में इसका ओरिजिन है. एंड ऑल्सो दिस मसल इंसर्ट्स ऑनटू द लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर. So you can look at this diagram कि इसका origin है. There's an anterior line, there's one posterior line, and from the anterior and the posterior line ये बीच में मसल को origin हुआ, और ये मसल यहाँ से निकलकर आपकी जो आपका फीमर है उसके ग्रेटर ट्रोकैंटर पे गई, और उसके लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर. It abducts the thigh and it medially rotates the hip. Now, gluteus minimus muscle, it originates from the outer surface of ilium. Again, outer surface means there are two basic surfaces: the outer surface and the internal surface. The outer surface, the posterolateral or the gluteal surface, and the internal surface, we can say it is a medial surface, जिसके ऊपर दो आपके surfaces से auricular facet था, and there is one iliac fossa from where the iliacus muscle is getting originated. Now let's talk about the gluteus minimus. It originates from the outer surface of ilium. It means from the gluteal surface, and it is present between the inferior and the anterior line, anterior gluteal line. सो ग्लूटियस मीडियस आपने इससे पहले पढ़ी, वो आपकी पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में से निकली थी. और ग्लूटियस मिनिमस जो है आपकी, ये इंफीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच से निकलेगी. इंसर्शन जो है इसका एंटीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर. अगेन है ग्रेटर ट्रोकैंटर पर ही, लेकिन ग्लूटियस मीडियस जो थी वो ग्रेटर ट्रोकैंटर के लेटरल सरफेस पे थी, और ग्लूटियस मिनिमस जो है ये आपके लेटर ट्रोकैंटर के एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है. इट एबडक्ट्स एंड मीडियली रोटेट्स द हिप जॉइंट. The gluteus maximus, it inserts onto the iliotibial band, the gluteal tuberosity, posterior femur, and extends and laterally rotates the hip. So you can look at this a big muscle, right, as compared to the gluteus medius and the minimus one. So ये आपकी जो मसल है, ये आपकी इंसर्ट जो हो रही है, आप देख रहे हो कि यहाँ से निकली, और इंसर्ट कहाँ पर है, जैसे आईटी बैंड जो लेटरली व्हाइट कलर का बैंड है. सो ये मसल निकली और ये आईटी बैंड तक कंटिन्यू कर रही है. कुछ पोर्शन इसका फीमर पे जा रहा है, कुछ पोर्शन इसका आईटी बैंड में जा रहा है. सो यहाँ पे यही लिखा है कि इसका जो इंसर्शन, इट इज आईटी बैंड, इलियोटिबियल बैंड, एंड द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द पोस्टीरियर फीमर. फीमर के पिछली साइड पर, पोस्टीरियर साइड पे, देयर इज अ ट्यूबरोसिटी दैट इज कॉल्ड द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी.
It helps in extension of the hip joint and lateral rotation of the hip joint, or it literally rotates the hip. Now the origin of the gluteus maximus. The origin of gluteus maximus, it is a posterior aspect of dorsal ilium. Dorsal again, it's a posterior ilium, posterior to the posterior gluteal line. तो आपकी जो posterior gluteal line आएगी, this is the posterior gluteal line, इसके भी posterior, it means that if this is a posterior gluteal line, इससे भी पीछे की साइड यहाँ पर ये मौजूद है, right? तो posterior gluteal line के भी पीछे, so that's why यहाँ लिखा है it originates from the posterior aspect of dorsal ilium, posterior to the posterior gluteal line. Again, it also originated because it's a big muscle. इसका origin एक नहीं है, दो तीन landmarks पे है. So posterior superior iliac crest से भी इसका थोड़ा सा origin आता है. Posterior superior surface of the sacrum and coccyx, that is the cock. And then there's a sacrotuberous ligament. Sacrotuberous ligaments है जो यहाँ से निकल रही हैं. So sacrum पर भी है, you can look at the diagram. सेक्रम पर भी है, पीछे आपकी इलियक क्रेस्ट पर भी है, और आपके इलियम के जो है, जो पोस्टीरियर आपकी लाइन होती है ग्लूटियल लाइन, उसके पोस्टीरियर से भी इसका ओरिजिन है. Let's talk about piriformis. It originates from the anterior surface of the sacrum and gluteal surface of the ilium at the margin of greater sciatic notch. So there's a notch in the hip bone. So जो आपको एक kind of ऐसा structure दिखेगा hip bone के अंदर, this U-shaped cavity जो आपको दिख रही है, this is called the sciatic notch. Why we are saying it is a sciatic notch? Because the sciatic nerve, it passes from this notch. So this is the sciatic notch and the piriformis जो मसल है piriformis ये originate होती है. Origin जो है it is present at the anterior surface of sacrum, मतलब sacrum के आगे anterior वाले surface पे, and the gluteal surface of the ilium at the margin of greater sciatic notch. So this is the margin of the greater sciatic notch and इसके भी बिल्कुल gluteal surface पर है. Origination हो गया, it inserts onto the superior aspect of the greater trochanter of femur. Again greater trochanter पर है, कुछ कोई मसल उसके anteriorly inserted है, कोई lateral inserted है, कोई हमारी anteriorly या superiorly inserted है. So here it inserts onto the superior aspect of the greater trochanter of femur. You can see कि ये थोड़ा portion इसका sacrum में से निकला, कुछ origin जो है इसका gluteal या sciatic notch के ऊपर gluteal crest है वहां से आया, and now it is going to the superior portion of the greater trochanter of the femur. It helps in lateral rotation of the hip. Again, laterally rotates the hip. Now the next muscle is the superior gemellus. It originates from a small area on the outer surface of the hip bone below the ischial spine. Ischial spine के just थोड़ा सा नीचे is a very small area. It inserts onto the medial surface of the greater trochanter of femur. So you can look at this diagram that this is the ischium, right? This is the ischium, this is the body of ischium, and ischium के just थोड़ा सा नीचे की साइड से ये निकल रही है, और इसका insertion जो है again it is on the greater trochanter of the femur, that is the superior gemellus. Next is the semitendinosus. Semitendinosus, it originates from superomedial quadrant of the posterior surface of the ischial tuberosity. Ischial tuberosity जहां पर हम बैठते हैं, इसके posterior surface पे, पीछे वाले surface से ये निकलती है और ऊपर से निकलती है. So it originates from superomedial quadrant of the posterior surface of the ischial tuberosity. It inserts onto the superior aspect of the medial tibial shaft behind the sartorius and gracilis. So you all know medial tibia पे, upper tibia के medial epicondyles पे, medial side पे अगर हम देखते हैं, so sartorius जा रही थी, वहीं पर gracilis भी है. gracilis and sartorius के just पीछे की साइड पर इंसर्शन होता है हमारा semitendinosus मसल का. From this portion it originates. Next, superior gemellus. We have already studied about the superior gemellus. Now, the very important muscle of the lower limb about the of the hip joint, that is the bicep femoris.
So let's talk about the long head of bicep femoris. Bi means there are two seps, right? There are two heads of the muscle, bicep femoris. Let's talk about the long head. It originates from the superior medial quadrant of the posterior surface of ischial tuberosity. Again, ये आपकी इस ischial tuberosity के posterior surface से निकल रहा है, but from the superior medial quadrant. Inserts in common with the short head onto the, ये short head के साथ मिलकर इकट्ठी एक insertion जो है create करती है फिब्यूला के हेड पर. नाउ दिस फर्स्ट मसल जो हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं, जो कि फिब्यूला पर भी जाकर इंसर्ट हुई. सो फिब्यूलर हेड पर ये इंसर्ट हुई. लेटरल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ नी, यहीं पर साइड पे अगर हम नी जॉइंट जब हम आगे इन फर्दर वीडियोस में देखेंगे, सो देयर इज अ लेटरल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ द नी. सो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ नी के साथ भी इंसर्शन है कॉमन दोनों हेड्स का, बाइसेप फेमोरिस के और आपके फिब्यूलर हेड पर भी इसका इंसर्शन है, एंड ऑन आल्सो ऑन द लेटरल टिबियल कॉन्डाइल. Semitendinosus, we have already studied that it helps in extension of hip and flexes and medially rotates the knee. Semimembranosus. Now the semimembranosus originates from superior lateral quadrant of posterior surface of ischial tuberosity. Again the same thing, ischial tuberosity के posterior surface है, लेकिन superior lateral quadrant के through इसका origin है semimembranosus, and इसका insertion जो है it is on the medial tibial condyle, medially side पर tibial condyle पर, and fascia over the popliteus. Popliteus it is also a muscle. Popliteus muscle के ऊपर जो fascia है वहां पर इसका insertion है, and also along with the oblique popliteal ligament. And about these popliteal ligament and the popliteus muscle you will get to know in the knee joint video. Now the quadratus femoris, it originates from the lateral border of the ischial tuberosity and inserts on the quadrate tubercle on the intertrochanteric crest and adjacent area of posterior femur. फीमर के पिछली साइड वाले एरिया पे, पोस्टीरियर सरफेस वाले एरिया पे जाकर ये इंसर्ट होती है. इसके अलावा ट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट, दो ट्रोकैंटर्स होते हैं फीमर के हेड में. वन इज अ ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड अनदर वन इज अ लेसर ट्रोकैंटर. ग्रेटर और लेसर ट्रोकैंटर के बीच में द इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट है, वहां पर एक क्वाड्रेट ट्यूबरकल है, और उस क्वाड्रेट ट्यूबरकल पर जाकर क्वाड्रेटस फेमोरिस का इंसर्शन होता है. Next is the adductor magnus. The adductor portion originates from the inferior pubic ramus and ischial ramus. So inferior pubic ramus, this area, in the and the ischium ramus is this area, ischial ramus. इस एरिया से origin है adductor magnus का. Hamstring portion or originates from the ischial tuberosity. अगर इसका hamstring portion की बात करें तो डायरेक्टली ये ischial tuberosity से निकलता है. Adductor portion inserts onto the line of aspera. Line of aspera, it is a line which is present on the posterior surface of the femur. So that about the line of aspera and the anatomical landmarks of the femur you will get to know in the next video of the femur. Adductor portion inserts on the line of aspera. Hamstring portion inserts on the adductor tubercle. So there is one adductor tubercle जहाँ पर आपका adductor hamstring portion जाकर insert हो रहा है, and there is adductor portion जो है वो आपका line of aspera पे जाकर insert होगा. So you can look at this diagram कि ischial ramus and inferior pubic ramus के through origin है इस muscle का, और the muscle it is going, the adductor magnus, it is going on the posterior surface on the line of aspera of the femur, and the another one is on the adductor magnus, adductor tubercle पे. Now the adductor magnus, it has two different functional components. Adductor portion originate from the inferior pubic ramus and ischial ramus. Hamstring portion originate from the ischial tuberosity. So we all know that there are two parts. एक आपका adductor magnus वाला adductor वाली side वाला area है, एक आपका hamstring portion है. तो जो आपका adductor portion है वो inferior pubic ramus से निकला, ischial ramus से निकला. जो आपका hamstring portion है वो direct आपका ischial tuberosity से निकलेगा, originate होगा. Next is the quadratus femoris. About quadratus femoris we have already studied, but the action is laterally, it laterally rotates the hip. Adductor brevis is again
a new adductor muscle. As the name suggests, it helps in the adduction of the hip joint, right? So adductor brevis, it originates from the pubis, the inferior ramus and the body again. ये body है pubis की और ये उसके नीचे inferior ramus है, यहाँ से origin है. And it is going inserted on the upper third of the line of aspera. So femur पे line of aspera है और उसके भी upper one third पे जाकर इस muscle का insertion है. It helps in the adduction of the lower limb. The adductor magnus we have studied. The hamstring portion is there. Hamstring portion जो है वो extension करवाएगा hip joint की और adductor portion जो है वो adduct और medially rotate करवाएगा hip joint को. As the name of this muscle suggests, it is adductor magnus, right? So कोई भी अगर ये नाम बोलेगा कि what is the action of adductor magnus, it is the most frequently asked question in the Viva examinations कि what is the action of adductor magnus. सो जो भी स्टूडेंट सुनेगा कि एडक्टर मैग्नस है, ठीक है, इट मींस इट विल हेल्प इन द एडक्शन, राइट? बट ये एडक्शन के साथ साथ जो इसका हैमस्ट्रिंग पोर्शन है वो एक्सटेंशन भी करवाता है हिप जॉइंट की. सो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट देयर आर टू पोर्शंस इन द एडक्टर मैग्नस मसल. One is the adductor portion, which helps in the adduction, or we can say the medial rotation of the hip joint, and the hamstring portion of the same muscle, that is adductor magnus, it helps in the extension of the hip joint. Next is the adductor longus. It originates from the anterior surface of the body of pubis. यहाँ से आपका adductor longus निकलेगा, inserts on the line of aspera. So ये बिल्कुल आपका body से निकला pubis की और line of aspera पे जाकर adductor longus जो है वो insert हो गया. Again, the adductor brevis, it adducts and flexes the hip. Adductor longus, it adducts, flexes, and medially rotates the hip joint. Next is the gracilis. It originates from the inferior ramus of pubis and ramus of ischium. So this is the pubis, this is the inferior ramus of the pubis, this is the ischium, and this is the ischial ramus. तो यहाँ से origin है gracilis muscle का. It inserts on the medial surface of the upper tibial shaft. So ये जा रही है ऊपर इस वाले एरिया से आपके रेमस से, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड इनिशियल रेमस से जाएगी. ऑरिजिन है, इंसर्शन है इसका बिल्कुल नीचे जाकर आपके अपर टिबियल शाफ्ट में, टिबिया की शाफ्ट पे. नेक्स्ट इज द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, posterior bony margins of obturator foramen. Inserts onto the greater trochanter of femur. So insertion again wide area, this is on the greater trochanter of femur. And जो इसका origin है, तो this is the obturator foramen, right? Obturator foramen के बाहर वाले एरिया से, on the outer surface से आप देख सकते हैं, from this surface इसका origin है. Obturator externus. Gracilis, as we have studied, it helps in adduction of the hip. It flexes the knee, medially rotates the tibia on femur. Next is the rectus femoris. Rectus femoris, a straight head, originates from anterior inferior iliac spine. So this is the ASIS, important bony landmark. Just below the ASIS, you have the AIIS, that is in anterior inferior iliac spine. Straight head जो है rectus femoris muscle का, वो आपका anterior inferior iliac spine से originated है. और जो reflected head है इसका, it is originated from the ilium just above the acetabulum. So the acetabulum and this is the ilium. So just above the acetabulum on this area, the reflected head is originating. Obturator externus, it helps in the lateral rotation of the hip joint. Insertion origin हम कर चुके हैं already. It helps in lateral rotation of the hip. Iliacus muscle we have already studied. It flexes and medially rotates the hip joint. Inserts onto the lesser trochanter of femur and originates from the iliac fossa of the ilium, upper two-third portion. This is the plane surface जो आपका एक auricular facet है, उसके अलावा जो ऊपर वाला surface है ilium का, यहाँ से इसका origin है और इसका insertion आपका lesser trochanter पे है femur के. It flexes and medially rotates the hip. Rectus femoris, we have studied that
इसका स्ट्रेट हेड जो है वो आपका AIIS से निकला, जो इसका रिफ्लेक्टेड हेड है वो जस्ट अबव द acetabulum से निकला of the ilium, and it inserts onto the patella to form a central portion of quadriceps femoris tendon. तो जो quadriceps femoris tendon यहाँ पर ये व्हाइट कलर का बना, ये कॉन्टिन्यूटी है इसी rectus femoris की. So the rectus femoris, it will go down, it will descend down to the patella, and then it forms the central portion of the quadriceps femoris tendon. It extends. It helps in the extension of the knee joint, or you can say it helps in, and it extends the knee. Now the muscle summaries. Let us revise. Anterior thigh. अगर हम आगे की थाई की साइड बात करते हैं, so we have the tensor fasciolate. This is a TFL, origin ASIS, outer lip of anterior iliac crest and fasciolate. Insertion via the iliotibial band onto the Gerdy's tubercle. There is a Gerdy's tubercle on the upper tibia on the lateral tibial condyle. Action is it assists gluteus maximus in maintaining extended knee and abduction of hip. Nerve supplies by superior gluteal nerve L4 and L5S1 according to the dermatome. Blood supply by superior gluteal and lateral circumflex femoral artery. Anterior thigh pay, another muscle is sartorius. Origin is from the anterior superior iliac spine. You can look at the diagram ASIS. Now the insertion, superior aspect, medial surface of tibial shaft. The medial surface of tibial shaft here. Action, it helps in flexion, adduct, and laterally rotate the hip joint and flexes the knee. Nerve supply, anterior division of femoral nerve, that is L3, L4, and blood supply is by the femoral artery. Now the gluteal region or the posterior thigh region. Gluteus maximus, origin from it is a big muscle, it has multiple origin. So origin from posterior aspect of dorsal ilium posterior to posterior gluteal line, posterior superior iliac crest, lateral sacrum and coccyx, and sacrotuberous ligament. Insertion onto the IT band, iliotibial band, gluteal tuberosity, posterior femur. Action, it helps in extension of the hip joint and laterally rotates the hip. Nerve supply by inferior gluteal nerve L5, S1, S2. Blood supply inferior and superior gluteal arteries. Second is the gluteus minimus, origin outer surface of ilium between the inferior and anterior gluteal line. Insertion anterior surface of greater trochanter of femur. Action abduction and medially rotating of the rotation of the hip joint. Nerve supply by superior gluteal nerve L4, L5, S1, and blood supply by superior gluteal artery. Now the gluteus medius, origin outer surface of ilium between the posterior and anterior gluteal lines. Insertion lateral and superior surface of greater trochanter of femur. Action, it helps in abduction of thigh, medially rotation of the hip joint. Nerve supplies by the superior gluteal nerve L4, L5, S1, and blood supplies by the superior gluteal artery. Now let's talk about the posterior thigh, the region just below the gluteal region. The semitendinosus, origin, superior medial quadrant, posterior surface ischial tuberosity. Insertion, superior aspect, medial tibial shaft. Action, extend hip, flexes and medially rotates the knee. Nerve supply, tibial portion, sciatic nerve, L5, S1, and the blood supply perforating branches of the profunda femoris artery, inferior gluteal artery, and the superior muscular branches of popliteal artery. Now the gluteal region, again, there's one more muscle, superior gemellus. The origin is on the outer aspect of ischium. Insertion, medial aspect of greater trochanter of femur, in common with the obturator internus, you can say. Action, laterally it rotates the hip. Nerve supply is the nerve to the obturator internus. Blood supply by the inferior gluteal artery. Next is the on the gluteal region, the piriformis. Origin,
anterior surface of lateral process of sacrum and gluteal surface of ilium at the margin of the greater sciatic notch. Insertion, superior aspect, greater trochanter of femur. Action, lateral rotator of the hip joint. Nerve supply, anterior primary rami S1 and S2, and the blood supply by the superior and inferior gluteal and internal pudendal arteries. Quadratus femoris, the origin from lateral border ischial tuberosity, insertion quadrate tubercle, and adjacent bone of intertrochanteric crest of posterior aspect of the femur. Action laterally rotates the hip. Nerve supply the nerves to the quadratus femoris. Blood supply by the medial circumflex femoral artery, inferior gluteal artery, and the obturator artery. It is a small muscle. Semimembranosus, origin from superior lateral quadrant of posterior surface of ischial tuberosity, insertion at the posterior surface of the medial tibial condyle fascia over the popliteus and oblique popliteal ligament. Action, it helps in extension of hip, flexes and medially rotates the knee. Nerve supply, tibial portion of sciatic nerve L5S1. Blood supply by the perforating branches of profunda femoris artery, inferior gluteal artery, and the superior muscular branches of the popliteal artery. The bicep femoris origin, long head and the short head. Long head from the superior medial quadrant of the posterior surface of the ischial tuberosity. Short head from the middle third line aspera, middle third of the line of aspera or the linea aspera. Lateral supracondylar ridge of femur. Insertion on the fibular head, lateral collateral ligament, and the lateral tibial condyle. Action, it flexes the knee, rotates the tibia laterally, and extends the hip joint. Nerve supply, long head, it is supplied by tibial portion of sciatic nerve, and short head is supplied by common peroneal portion of sciatic nerve, that is L5S1. Blood supply by the perforating branches of profunda femoris artery, inferior gluteal artery, and superior muscular branches of the popliteal artery. Adductor magnus, it is present on the anterior thigh, origin adductor portion and hamstring portion. Adductor portion from inferior pubic ramus and ischial ramus, hamstring portion from the ischial tuberosity. Insertion of the adductor portion is on the linea aspera. The hamstring portion, it get inserted on the medial supracondylar ridge and adductor tubercle. Action of the adductor portion is adducts and medially rotates the hip, and hamstring portion, it helps in extension of the hip. The nerve supply, adductor portion, posterior division of obturator nerve, that is L2 to L3, L4, and the hamstring portion by the tibial nerve portion of the sciatic nerve, that is L4 and S3. The blood supply by the medial circumflex femoral artery, inferior gluteal artery, first and fourth perforating arteries, and the obturator artery, popliteal artery. Adductor brevis origin from the inferior ramus and body of pubis. Insertion upper third linea aspera of femur. Action adduct and flexes the hip joint. Nerve supply anterior division obturator nerve, that is L2, L3, L4. Blood supply by the medial circumflex femoral branch of femoral artery and obturator artery. Adductor longus origin from the anterior surface of the body of pubis, just lateral to pubic symphysis. Insertion middle third of linea aspera between the more lateral adductor magnus and the brevis insertions, and the more medial origin of the vastus medialis. Action adducts, flexes, and medially rotates the hip joint. Nerve supply anterior division of obturator nerve L2, L3, L4. Blood supply is by the obturator artery and the medial circumflex femoral artery. The iliacus, it originates from the upper two-thirds of the iliac fossa of the ilium, the lateral aspect of the sacrum, lesser trochanter of femur pesca insertion, and the action is flexion and medially rotation of the hip joint. Nerve supply is by the muscular branch of femoral nerve L2, L3. The blood supply is by the lumbar branch of iliolumbar branch of the internal iliac artery.
Rectus femoris, it originates from there are two heads, straight head and reflected head. Origin की बात करें अगर हम, तो straight head का जो origin है आपका anterior inferior iliac spine से है. Reflected head का ilium just above the acetabulum. Insertion base of the patella to form of the knee joint. Nerve supply, posterior division of femoral nerve L2, L3, L4, and the blood supply bilateral circumflex femoral artery. Again, on the gluteal region, you have the obturator externus muscle, which originate from the outer surface of obturator membrane and posterior bony margins of obturator foramen. Insertion on the trochanteric fossa of medial aspect of the greater trochanter of femur. Action, it laterally rotates the hip. Nerve supply, posterior division obturator nerve L2, L3, L4, and blood supply by the internal pudendal and superior and inferior gluteal arteries. So this is all about the hip joint.